गेंस का टैक्स देना पड़ेगा। एंड व्हाट वी हैव आल्सो रेड दैट दो टाइप की कैपिटल गेंस की टैक्स होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। नाउ विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स what are the long term assets, and we will also discuss what are the short term assets. So in the next slide we will discuss what are the types of capital gains. So first point is that short term capital gains, any gain on transfer of short term capital asset is called short term capital gain. And an asset held for a period of 36 months or less is a short term capital asset, an asset held for a period of 36 months or less is a long term capital asset. Some assets are considered short term capital assets when these are held for 12 months or less. This rule is applicable if the date of transfer is after 10th of July 2014, irrespective of what the date of purchase, that is zero coupon bonds, whether quoted or not. So we'll discuss about these assets. These are equity or preference shares in a company listed on a recognized stock exchange, securities like debentures, bonds listed on a recognized stock exchange in India, units of UTI whether quoted or not, units of equity oriented mutual fund whether quoted or not. So हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, एनी एसेट्स वी आर होल्डिंग up to 36 months or less is a long term capital assets. Any land or building which is being held for 24 months is a long term capital asset. Any equity, if it is a listed equity, if we held that for less than 1 year, then it's a short term capital asset. And any unlisted security अगर कुछ रहता है आपके पास, then the short term capital gain period will be 2 years. So 2 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, then it will be treated as long term capital gains. So now in the next slide we'll discuss about how to calculate the short term capital gain. So short term capital gain calculate करना is very easy because it is calculated as follows, that full value of the consideration, जिस भी प्राइस में आपने इसको सेल किया है, that is the full value of the consideration. Then you have to deduct the expenses on the transfer, like आपने कहीं पे कुछ brokerage पे किया या stamp duty पे किया आपने, you have to deduct that. Then from there the total net consideration will be coming. From there you have to deduct the cost of acquisition and the cost of improvement. Cost of acquisition means आपने जिस प्राइस पे इसको लिया है, मे बी इन जो भी ईयर में आपने उनको लिया है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. अगर आपने कोई घर लिया और उसके ऊपर आपने अगर उसको रीमॉडलिंग किया, आपने अगर स्ट्रक्चर में कोई जो भी चेंज चाहिए होगा आपने किया, देन दैट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. देन जो भी अमाउंट होगा दैट इज़ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. So short term capital gains में indexation नहीं आएगा. When we will discuss about the long term capital gains, there we will also discuss कि what are the indexation and what are the type of indexation we are having in India. लेकिन short term capital asset में हमें सिर्फ जो हमारी sales value है, sales value से we have to deduct the cost of acquisition and whatever with the cost we have incurred for improving that asset, that has to be deducted. So now we'll discuss how we can take the long term capital gains. So what is long term capital gain? An asset held for more than 36 months is a long term capital asset. Capital assets such as land, building and house property shall be considered as long term capital asset if the owner holds it for a period of 24 months or more, whereas below listed assets, if held for a period of more than 12 months,
shall be considered as long-term capital asset, like equity or preference shares in a company listed on a recognized stock exchange in India, then securities like debenture, bonds, government securities listed on a recognized stock exchange in India, then units of UTI, whether quoted or not, and units of equity oriented mutual fund, whether quoted or not. Zero coupon bonds, whether quoted or not. So, these assets are known as long-term capital asset. In case the asset is held for more than 36 months, is a long-term capital asset. But यहाँ पे एक exception है. Capital assets such as land, building and house property shall be considered as long-term capital assets. So 36 months is not there for land and building. It is 24 months for them. और जहाँ पे सिक्योरिटी आपकी अगर लिस्टेड है, then 12 months will be treated as long-term capital assets. So, we'll discuss now how to calculate the long-term capital gains. It is calculated as follows, that full value of consideration, from there we have to deduct the expenses on transfer, like I inform that in case you have paid some brokerage, or in case you have paid some stamp duty, or in case you have paid some amount to the broker, then you have to deduct those transfer from your net consideration, and then you have to take the indexed cost of acquisition. Like say you have taken any asset say in the year 1985, then you have to take the index amount of that asset, and from there you have to calculate if you sell it say in the year 2021, then you have to take the indexation value, then you have to calculate the net value after indexation, and after that you have to deduct this from the full value of the consideration. So then you will arrive at the figure of long-term capital gains. So how we should calculate the computation of period of holding? So it starts from the day when the asset is acquired by the assessee and ends on the day when it is sold or disposed or transferred otherwise. Hence the day on which capital asset is transferred is not to be counted in the period of holding, and shares held in a company in liquidation. While calculating period of holding of a shares, the period subsequent to the date on which the company goes into liquidation is to be excluded. So, capital asset acquired by specified modes mentioned in section 49(1), in the case of a capital asset which becomes the property of an assessee, in the circumstances mentioned in section 49(1), that is gift, will, succession, inheritance, etc., the period for which the asset was held by the previous owner shall be included. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि in case you receive any house or you become owner of any house or flat or any other capital asset through inheritance or something, then you don't have to pay tax on that. पर जब आप उनको सेल करते हो, then the question of capital gains tax will arise. So now we'll discuss about the tax rates on the capital gains. As we have discussed that there are two kinds of capital gains. One is the short term and other is the long term. तो अगर long term capital gains tax की हम लोग बात करते हैं, so the condition is on sale of equity shares, unit of equity oriented fund. Then applicable tax is 10% over and above rupees 1 lakh. So we understand that up to 1 lakh के ऊपर you don't have to pay any tax if LTCG is there, अगर आप equity shares को 1 साल तक आपने अगर hold किया है. Then long term capital gains tax, which is LTCG we say, except on sale of equity shares, units of equity oriented fund, उसके ऊपर applicable tax is 20%. Then we will discuss about the tax rate on the short term capital gains tax. So when security transaction tax is not applicable,
अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं रहता है देन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एडेड टू योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपकी उस साल की जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप हैं, इधर 10% और 20% और 30%, वहाँ पे ये अमाउंट ऐड होगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी टैक्स्ड ऑन दिस अमाउंट। देन इफ एसटीटी इज देयर, लाइक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज देयर, फिर अगर आप उसको सेल करते हैं देन द टैक्स रेट वुड बी 15%। सो फ्रॉम हेयर इट इज़ प्रिटी क्लियर दैट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस अगर है, अगर उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगता है, फिर आपकी जो टोटल इनकम है वहाँ पे ऐड होगा और जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप हैं उसके ऊपर आपकी टैक्सेशन अराइज करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर है, अगर वो शेयर्स नहीं हैं, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। सो नाउ विल डिस्कस ऑन टैक्स ऑन इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड्स। सो इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हमारी टैक्स रेट क्या है। जो डेट फंड्स है एट द टैक्स स्लैब रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो जो भी आपकी स्लैब रेट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अगर है तो आपको 20% विथ इंडेक्सेशन। ये डेट फंड्स के ऊपर है। एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर doing some kind of investment, those who don't want to take any risk, they would like to invest in the date funds. तो डेट फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो एंड अगर कैपिटल गेंस टैक्स आपका बनता है देन इट इज़ 20% विथ इंडेक्सेशन। और इक्विटी फंड्स अगर है देन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस विल बी 15%। सो इक्विटी फंड्स के ऊपर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है एंड जो अगर आपकी लॉन्ग टर्म में आपने होल्ड करते हैं तो टैक्स रेट वुड बी 10% होगा, पर अप टू 1 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। सो these are the total chapter on the capital gains. Now we'll discuss about the tax rule for the debt mutual funds. So debt mutual funds have to be held for more than 36 months to qualify as a long term capital asset. It means you need to remain you need to remain invested in these funds for at least 3 years to get the benefit of long term capital gains tax. If redeemed within 3 years, the capital gains will be added to your income and will be taxed as per your income tax slab rate. So, what we have understood today कि अगर कैपिटल एसेट आपके पास है और अगर आप उसको सेल करते हो तो उसके ऊपर आपकी कैपिटल गेंस का टैक्स आता है। एंड देयर कुड बी two types of capital gains tax. One is long term, one is short term. अगर any asset you hold for a period of 36 months apart from land and building, then it will be treated as capital gains, long term capital gains. अगर shares आपके पास है, अगर वो listed है, अगर आपने 1 साल hold किया, then that will be also taken as long term capital asset. And any other security, अगर वो unlisted नहीं है, if that security is listed, अगर आपने 1 साल से नीचे होल्ड किया then it will be as a short term capital asset. लेकिन अगर वो listed, अगर that security is not listed, फिर आपको 2 साल होल्ड करना पड़ेगा to make that a capital asset. So these are the rules. We have also read कि long term के ऊपर हमारी टैक्स रेट क्या है एंड शॉर्ट टर्म के ऊपर हमारी टैक्स रेट क्या है। शॉर्ट टर्म के ऊपर बेसिकली जो भी आपकी इनकम की टैक्स ब्रैकेट है वहीं पे जाके दिस इनकम विल बी एडेड एंड उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं देन यू हैव टू मेक ए प्रॉपर प्लानिंग कि वेदर यू शुड कीप इट फॉर सम मोर पीरियड एंड मेक इट ए कैपिटल एसेट सो दैट आपकी टैक्स अमाउंट विल बी लेसर। और अगर आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हाँ अगर मैं सेल कर देता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आता है तो उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन ऑन दोज पॉइंट्स। सो हमने ये सारा चीज़ डिस्कस किया ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू ऑल कि आपको बेसिक आइडिया जो है